Hi friends, I'm Sapna Aggarwal, Creative Director at Ansa Interiors, and today in my design discussion series, I'm going to talk about how to choose a ceiling fan, the size, blades, and the airflow. With so many variables and options, choosing the perfect ceiling fan and picking the right size can be a little daunting. So we have just compiled, a little advice and guide for you to choose that ceiling fan which fits all your needs. हमेशा एक सवाल होता है कितने साइज का सीलिंग फैन, तो उसी के ऊपर काफी सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे. Determining what type of ceiling fan you should add to your room of the choice can be seemingly a surprisingly complex decision when you're just starting out. You need to consider the dimensions of the room, the size of the fan, the airflow, and the CFM, the length of its blades, how many blades, the material of the blades, and many more. कभी पंखा खरीदते हुए सोचा था इतने सवाल आते हैं मन में, बट मैं आपके कुछ सवालों का अभी जवाब दूंगी. हाउ डू यू चूज अ सीलिंग फैन साइज दैट फिट्स माई रूम? So the first thing to consider when deciding your ceiling fan size is the size of the room in which it will go. The square footage of a room dictates how big the ceiling fan will be, because a fan that is too small or too big for that space will not circulate the air properly. So, if you don't know it already, you can measure the ceiling fan size by recording the diameter of its blade sweep, यानी कि from end to end. और अगर आपका जो ब्लेड है वो वन ब्लेड है तो आप सेंटर से एंड तक जाएंगे. अगर आपका ऑड नंबर है फैंस का तो आप सेंटर से एंड तक जाके उसको डबल करेंगे. अगर आपका इवन नंबर है तो आप एंड टू एंड मेजर करेंगे. इससे आपको ना सिर्फ आपके फैन का साइज पता चल जाता है. वंस यू नो हाउ लार्ज योर सीलिंग फैन साइज इज, यू विल नीड टू मेजर द साइज ऑफ योर रूम. सिर्फ स्क्वायर फीट लेंथ इनटू विड्थ. सो सीलिंग फैन की एक टिपिकल गाइड होती है कि अगर आपका जो रूम साइज है वो लेस देन 50 स्क्वायर फीट है, देन यू नीड अ 29 इंचेस और लेस. सो समहाउ अगर आपका जो रूम साइज है वो 75 स्क्वायर फीट आ रहा है तो आपको 36 इंचेस का फैन चाहिए. आपका रूम साइज अप टू 100 स्क्वायर फीट आता है तो आपको 42 इंचेस का साइज चाहिए. अगर आपका रूम साइज 225 स्क्वायर फीट आता है तो आपको 52 इंचेस का साइज चाहिए. जनरली ऐसे साइजेस डाइनिंग रूम्स या पेटियो एरियाज में लगते हैं. बट अगर आपका 400 स्क्वायर फीट से ऊपर रूम है तो आपको 56 इंचेस का साइज चाहिए. जनरली लार्ज एरियाज या ग्रेट रूम्स में लगते हैं. But in larger areas, depending on the shape of the room, another option can be to give two smaller fans instead of a one bigger fan. When sizing the ceiling fan, your room size, you want a minimum 18 to 24 inches clearance on all sides of the fan. यानी कि fan से 24 इंच दूर तक कोई electronic equipment, कोई light नहीं होनी चाहिए. How do I determine the hanging length? सपोजिंगली आपको अपने फैन को लटकाना है तो आप उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो फैन है दैट शुड बी एटलीस्ट 7 फीट 6 इंचेस ऑफ द फ्लोर. उतनी हाइट से ऊपर होना ही चाहिए. 8 to 9 फीट विल बी द ऑप्टिमम सर्कुलेशन. फॉर हायर सीलिंग्स जहाँ आपकी हाइट 10 फीट से भी ऊपर हो जाती है, यू कैन हैव फैन्स विद डाउन रॉड्स, थोड़ी लंबी रॉड्स के साथ, to achieve that right height. The more the space between the ceiling and the blades, the better is the airflow and the circulation. Ideally 12 इंच तो होना ही चाहिए फैन और सीलिंग के बीच का गैप. बट अगर आपकी सीलिंग बहुत लो है, फॉर रूम्स जिनकी टोटल हाइट ही हमें 8 फीट मिलती है और या वो छोटे होते हैं, तो आपके फ्लश माउंटेड फैंस आते हैं दैट आर आइडियल ऑप्शंस टू यूज. As the name suggests, these fans literally hug the ceiling to create a low profile. In order to achieve their short height, these flush mount fans do not incorporate down rods in their design. Let's consider room with a ceiling height of 9 feet high or even higher. तो जो सीलिंग फैन है उसकी जो डाउन रॉड होती है, इट हैज टू फिट एब्सोल्युटली करेक्ट. डाउन रॉड्स जनरली अवेलेबल होती है 3 to 72 इंचेस इन लेंथ, and what suspends the fan, and that it helps to suspend the fan from the canopy. This is ideal because more space between the fan and the blade
एंड द सीलिंग विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट फॉर एयर सर्कुलेशन, यानी कि हमारी फैन और सीलिंग के बीच में जितनी जगह बढ़ती जाएगी उतनी सर्कुलेशन बेटर होती जाएगी. फैंस विल टिपिकली कम विद 1 or 2 डिफरेंट डाउन रॉड्स, और उनकी स्टैंडर्ड लेंथ होती है, बट आप उसको बढ़ा या घटा सकते हैं. ये हम नॉर्मली यहाँ पर हम कटिंग के साथ भी कर सकते हैं. Additional down rod in other sizes can also be purchased. For a room with 9 feet ceiling, select a fan with a 6 inches down rod. For ceilings that are taller than 9 feet, add 6 inches to the down rod for every 1 foot of height. यानी कि 10 फुट हुआ तो आपका 12 इंच हो गया, 11 फीट हुआ तो 18 इंच हो गया, and so on. That brings me to another question. Can I install a ceiling fan if we have a sloped ceiling? Aside from the hugger fans, most fan canopies, the part which attaches the ceiling to the junction bonds, वो एक cover नहीं आता, उसको कहते हैं. These can accommodate a degree of slope, usually up to 30 degrees. उससे एडिशनल जो लॉन्गर डाउन रोड होती है, दैट में नीड टू बी परचेस्ड, बिकॉज आपका नहीं तो पंखा अटकना शुरू हो जाता है, तो उसकी रॉड लंबी होती है ब्लेड क्लियरेंस के लिए. बट फॉर स्लोप्स विच आर स्लोपर देन दैट, देन यू नीड टू हैव अ स्पेशल सीलिंग फैन टू बी इंस्टॉल्ड. ऑल्सो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं विच ऑफर स्लोप सीलिंग अडाप्टर्स, often called angle mounts, specifically for sloping roofs. But then, can the fan also light up my room? Many fans come with light kits or will offer a compatible option. A great consideration that will provide overhead ambient illumination. But, may need to be supplemented with other fixtures. खाली उस लाइट से कुछ होता नहीं है. Ceiling fans can be ordered with or without light, as you prefer. They're available in both the designs. Next question I would say is, can I use a ceiling fan outdoors? Because ये इतना frequent question है जो मेरे पास आता है. Yes, as long as the outdoor ceiling fan is damp or wet location approved. Damp location fans can be used under the covered porches and patios, whereas they will not come into direct contact with the elements. Wet location fans जो listed होते हैं, they can be used in locations more susceptible to water contact. These water and weather resistant motor housing and blades and some other equipments in waterproof light kits need to be provided additional when you are considering outdoor lighting. Many a times I've also been asked, how does a ceiling fan work? In its most basic sense, a ceiling fan works by rotating the pitched blades. तो जो ब्लेड्स होते हैं जब वो रोटेट करते हैं, दे क्रिएट एन एयर फ्लो दैट प्रोड्यूस बेटर एयर सर्कुलेशन, thus helping cool the body. The cooling sensation is of course only due to the movement of the fan. While it may not enhance, it is not really decreasing any degree. It is only enhancing the effectiveness of your AC or heating system by circulating the cooled or heated air. A ceiling fan on its own actually cannot change the temperature of the space. एक ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आता है कि हम सिर्फ फैन को क्या स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं. हाउ डू आई रियली कंट्रोल माई फैन? नो, देर आर एक्चुअली 3 ways you can operate the fan. You have a pull chain जो बिल्कुल उसके साथ लगी होती है, a handheld remote और a wall control system जिसको हम switches कहते हैं. Pull chain is located right on the fan and provides an easy way to adjust the speed and turn a fan on or off. Its light also has to have a pull chain which is separate. दोनों चीजें combine करके दोनों चीजें operate की जा सकती हैं. Remote. The most convenient of all fan controls is a handheld remote which allows for the fan to be operated from anywhere in the room. Wall switches जो हम सबके घर में लगते हैं, wall controls are convenient way to operate the ceiling fans, as the light switch is for the lamp. जैसे आप उसको जैसे ही आप doorway में enter करते हो उसके साथ ही लगा देते हो, so then the chance of forgetting to turn off the fan when you're leaving a room is greatly reduced. But in some instances you can also have the best of both worlds with a remote control and a wall switch combo, or a remote control and a wall mount combo, so that आपको दोनों चीजें conveniently मिल जाएं.
अब ना सारे फैंस के पीछे एक लिखा होता है CFM, बट व्हाट इज CFM एंड द सीलिंग एयर फ्लो? एयर फ्लो क्वांटिटी, जो एयर फ्लो होता है, जो लिखा होता है CFM, air flow actually quantifies the amount of air the ceiling fan delivers and is measured in CFM, which is a standard for cubic feet per minute. CFM measurements are taken when a fan is on high speed. Then the number is divided by what it uses. This means that the higher the CFM, the more efficient the fan is and the more the air will flow. 75 CFM per watt is the minimum to be considered. जिस फैन को हम ये कहते हैं कि वो थोड़ा efficient consideration में आता है, उसकी इतनी energy efficiency होनी चाहिए, ये requirement हमारी government का norm है. At a glance, I'll give you some information to help you to gauge a ceiling fan's airflow and efficiency. This makes it easier to compare two or more fans of the similar size. But what CFM is best? On high speed, I would say a good CFM range would be 4,000 to 5,000. Better ranges would be 5,000 to 6,000. And the best would be जिसका 6,000 से भी ऊपर है. But अगर हम ऐसे देखते हैं, there are so many things to be considered when picking a ceiling fan blade. But what should you consider when you're really picking up ceiling fans? उसके blades को आप decide कैसे करते हो? The number of ceiling blades is often an important point in deciding what type of ceiling fan to purchase. But this is becoming less a question of function and more of a personal choice with advancement in technology. It used to be the case कि 5-6 blades का अगर आप ceiling fan लगाते हैं तो that would translate into more efficiency as opposed to a 3 blade or a 4 blade. But that's no longer the case. We already know कि CFM is a measure of fans airflow efficiency. उससे number of blades का कोई relation नहीं रह गया. The number of blades is more related to your embellishment, the style of your space. For example, 4-5 blade ceiling fans provide a more conventional balanced look, whereas a fan with 3 or 2 or even 1 will provide a modern and a sleek style. Now, with all that information in hand, you should be ready to find the right fan for your space. Thank you, friends. Thank you for listening to this article on how to choose a ceiling fan. For residential and commercial architecture and interior design consultancy, you can contact us on www.ansainteriors.com. Don't forget to share, like, and subscribe to our channel. See you next week. Bye.